Hello friends, welcome to Sunshine Coaching Academy. I am Suresh Sir from Ahmedabad, Gujarat. In this video, I am discussing about practical sums of goodwill. It is lecture number 3 of Valuation of Goodwill in Accounts Part 1 of Standard 12 Gujarat Board. First of all, starting question number 4 of exercise on page number 105 in textbook. From the following information of Bhavish and Vipul's firm, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of last 5 years average profit. Information of last 5 years profit is as under. So information of last 5 years profit is given. Year 2011-12 profit is 1 lakh. Year 12-13 profit 1 lakh 10 rupees. 1 lakh 10,000 rupees. Year 13-14 profit 1 lakh 80,000. Year 14-15 profit 2 lakh. Year 15-16 and profit 1 lakh 50,000. So let us see the solution of this sum. First step is to calculate average profit, the formula of which will be total profit of given years divided by number of years. 5 years थे 1 lakh plus 1 lakh 10 plus 1 lakh 80 plus 2 lakh plus 150. So हमने यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से सभी 5 years के प्रॉफिट को प्लस किया और उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे. So sum of all these profits of 5 years will be 7,40,000 divided by 5 करके आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,48,000. So this is step number 1 to calculate average profit, which is 1,48,000. Second step is to calculate goodwill, formula of which will be average profit into number of years of purchase. Defined years means वो sum में given होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं on the basis of 4 years purchase. So average profit 1,48,000 into number of years of purchase 4 years जो sum में provided था. So multiply करेंगे तो 5,92,000 will be the value of goodwill. So it is solution of question number 4. Let us see next question. Question number 5 of exercise on page number 105 in textbook. It is provided that Mahindra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They want to change their profit and loss sharing ratio to 1:1. Old ratio of Mahindra and Praveen partnership firm is 3:2. After that, they are deciding to change it to 1:1. 3:2 के रेशियो में से वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:1 करना चाहते हैं. Therefore, they decided to make valuation of goodwill. नीड ऑफ गुडविल में हमने देखा था कि नीड गुडविल की कैलकुलेशन की क्यों पड़ती है. तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट. तो लास्ट 4 years की एवरेज प्रॉफिट की डेटा दी हुई है सम में और 5 years परचेस के बेसिस पे गुडविल का आंसर फाइंड करना है. सो ईयर 2013-14 प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज. ईयर 2014-15 प्रॉफिट इज 80,000 रुपीज. ईयर 2015-16
negative 20,000 is given, that is in the year of 2015 and 16 there was a loss of 20,000. जब भी कोई अमाउंट ब्रैकेट में दिया हुआ हो दैट मीन्स उस ईयर में लॉस इंकर हुआ है. ईयर 2016-17 प्रॉफिट इज 30,000 रुपीज. सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल, to calculate average profit, you can see profits in the sum 60 plus 80 plus negative 20 plus 30. 60,000 plus 80,000 plus negative 20, जो नेगेटिव है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 30 डिवाइड बाय 4 years डेटा प्रोवाइडेड है. So total of all 4 years will be 150,000, 1,50,000, 60,000 plus 80, 1,40,000, 1,40 plus 30 प्रॉफिट वाला लास्ट ईयर वाला 170. 170 में से लॉस 20,000 माइनस हो जाएगा, सो सम विल बी 1,50,000. डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 37,500 रुपीज. Next step is to calculate goodwill. Number of years of purchase. सम में देख सकते हो आप on the basis of 5 years purchase. So average profit 37,500 into number of years of purchase 5. So the multiplication will be amount of goodwill 1,87,500 rupees. Let's see next question. Question number 6 of exercise on page number 105 in textbook. From the following information, find out weighted average profit. Only weighted average profit find करना है. 4 years की डेटा गिवन है. ईयर 2013-14 प्रॉफिट 60,000, ईयर 2014-15 प्रॉफिट 70,000, ईयर 2015-16 प्रॉफिट 90,000, ईयर 2016-17 प्रॉफिट 1,10,000 रुपीज. सो यू कैन सी प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग वे. एवरी ईयर प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज. तो जब भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उस टाइप की डेटा में वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई किया जाता है. तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन में भी बोला हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. और अगर नहीं बोला हुआ होता तो ऑन द ट्रेंड ऑफ द डेटा मीन्स ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स वी कैन सिलेक्ट विच मेथड विल बी अप्लाइड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, that is average profit, either simple average or weighted average. Let us see the solution of question number 6. First of all, the statement showing weighted profit. So profit की data 60, 70, 90 and 1,10. 60, 70, 90, 1,10 ईयरली प्रॉफिट लिख देंगे. उसके बाद रिसेंट ईयर्स जो हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाएगा. सो इंक्रीजिंग वेज में ही हमें वेट देना है. 1, 2, 3, 4. 2013-14 को 1, 14-15 को 2, 15-16 को 3 एंड 16-17 को 4. प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो 3,30,000 आएगा. वेट का टोटल 10 और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेटेड प्रॉफिट मिलेगा. That is 60,000 into 1, 60,000 rupees, 17,000 into 2, 1,40,000 rupees, 90,000 into 3, 2,70,000 rupees, 1,10,000 into 4, 4,40,000. इन सबका टोटल करेंगे तो 9,10,000 होगा. That is 60,000 plus 1,40,000 plus 2,70,000 plus 4,40,000. So the sum of 9,10,000 will be weighted profit, but we have to calculate weighted average profit.
So formula of weighted average profit will be total weighted profit divided by total weight. So total weighted profit 9,10,000 and total weight 10. So 9,10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 91,000 will be weighted average profit. So friends, these were some practical sums of valuation of goodwill. Thank you so much.